and the topic that is given to me is the secrets of success. ठीक है? So, but let me take the same format. I don't want to say or blabber anything that is of relevance to me, but is not of much relevance to you. So, I'll use the format that Maithili used in the morning. कि कोई 3, 4, 5 सवाल सुन लेते हैं. Then I'll pause, respond to those, and then take the next set of 4 questions, and then we'll close whenever it is 6 p.m. Is that okay? Yes or no? No? Acha. So what do you want me to do? Everybody's question should be addressed. Okay, I can promise that. Write a question, leave it, I'll mail it back. वो भी हो सकता है. No? Okay, so what do you want to hear? What do you want to hear? I'm happy to hear. चलो शुरू तो कर देते हैं, है ना? लेकिन पहले 4-5 सवाल तो करो. क्या सुनना चाहते हो? How many aspirants looking at, let's say, management as a career? Okay. CAT 15, CAT 16, CAT 17, MBA 15, with some calls in the hand, or your no. Okay, so most of calls. Okay, there's one at the back. Okay, there are few. I can also see a couple of faces जो हाथ नहीं उठा रहे हैं. ठीक है, वो भी चलेगा. Okay, so क्या सवाल है? Any 3 questions, just shout. It'll give you some direction. Please. So my question is, I recently just read about the capitalist. हाँ. The first chapter only was about yourself. Oh, you're talking about the captainship. The captainship. Okay, right. मैंने कहा कैपिटलिस्ट, मैंने कहा इकोनॉमिक्स पूछेगी तो मैं तो फेल हो जाऊंगा. The captainship. हाँ. So उसमें ना, it's like कि you were a fan of cricket. हाँ. So but it didn't work out for you. So when it didn't work out, you realized this. So what were your feelings? And you changed your direction completely. Now I think there's nothing of cricket in you. So what were your feelings at that time when you were not? Okay. When you didn't got whatever you wanted. Sure. Good question. I'll answer that. So, like that, shoot pointed questions. वहीं से कुछ थीम निकलेगा. और कौन? क्यों रुके हो? मुझे ताज्जुब है कि क्यों रुके हो. मैं सोच रहा था जब तक मेरा मौका आएगा, हॉल खाली हो चुका होगा, मैं 8-10 लोगों से बातें करके चला जाऊंगा. या माइक. सर एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कैट तक पहुँचते हम ये सोचते हैं कि क्यों ना एसएससी भी ट्राई करें या बैंकिंग भी ट्राई करें, लेकिन मैंने खुद कई बार ऐसा एग्जांपल देखे हैं जो मतलब किधर के भी रहते हैं. कैट तक पहुँचते भी वो ये सोचते हैं कि घर ट्राई करें, घर तक पहुँचते फिर सोचते कि मैं काफी पीछे आ गया और आ गया ना. तो ऐसी सिचुएशन में मतलब अपना एम क्या रखना चाहिए? थैंक यू. What is your name? Amit. Okay. Mic. Do you have another mic? Gaurav? Can you just organize? Yeah, you had 2. Yeah. Run up. Yeah, please. Sir, a very simple question. As I read your profile, you are 12th dropout. सब लोग होमवर्क करके आए हो क्या? और वो भी मुझे दलील करने में तुले हुए हैं. How did you get success? अच्छा, मतलब नहीं मिलना चाहिए. ये भी ठीक है. The question is not that. Thank you. मुझे सोचेगा आप बोलोगे और भी गलत करोगे, बैठ जाता. चलिए ठीक है. और या यार तुम हर सेक्शन में सवाल पूछते हो यार. इससे एंट्री फी डबल कर लेना. एंट्री फ्री है क्या? जीरो ही होता है. हाँ, क्या बात. Sir, I would like to ask that what is it that makes you stand apart? I have seen many people who have left the world without going to any B school, and there are many others who have gone to IIM Ahmedabad but still haven't made any mark. So what should be the driving factor, as we tend to lose motivation over time? So what should be the qualities that we should inculcate that should make us stand apart and the world should remember us? एकदम संजीदा.
become serious. What's your name? Ankit. Okay. Stand apart. Maithili was saying that leftist rightist वाला एक centrist फिर एक leftist. Yeah, please. Sir, I was doing a corporate job some time ago, and then I decided I should go for IAS preparation after recommending various IAS officer already. After reading their article, that this is a job it will suit. So I joined CSET module and enrolled again. Now I have various self-doubt when I am preparing. I am starting in 15 December. I have various doubts. There are huge population old Rajendra Nagar discussing on UPSC or itna reservation bhi. So sometimes I have lots of self-doubt that I have the feeling that I would be able to clear that. I have the agenda, like I have always been an avid newspaper reader since my childhood. I have a feeling that I could clear, but sometimes the competition, the whole environment of competition demotivates me. So how to overcome the self-doubt? What is your name? Rahul Dadani. Okay, one question and then I'll start responding so that we can keep in. Yeah, second round में आपका. Sir, as we know that a lot academic knowledge required for SSC or UPSC or any engineering exam, but there is no requirement of academic knowledge for politics. A person who governs this whole thing. That's it. Statement of fact. इसमें सवाल क्या है? Means I want to know there should be. Do you think that there should be any academic knowledge for politics? What is your name? Sohan. Okay. Next round. I'm very worried that I might take questions, may not answer, but I'll answer all of them before we leave today. Okay. I'm tempted to take the cricket one last. Hello, sir. So actually, I'm already working right now, and I worked in various jobs. I thought a lot about my decisions, and I was sure at a moment that this is what I want to do, because as I'm a literature graduate, so I thought I would go in a profession which is based on languages. Now I've identified that I like creative and expressive fields, but what I thought my job would be is not exactly what it is. So I've looked at civils as well, and I think the syllabus, whatever it contains, every graduate should know the basics and everything. There's nothing wrong with that, but then I think even if you become a civil servant, you're still part of the system. What about creating your own identity? What about your own individuality? I mean, what is wrong with that? Why should we always just go with the status quo? There's nothing wrong with aspiring for something if you want to be there. But if someone, for instance, if someone has been brought up in Delhi or Mumbai, I'm not sure if they'll be able to adjust in a remote part of the country. I mean, it's good if they want to serve the people, but is it only civil servants who serve the people? What about the other people? If I'm happy, if I'm productive, if I'm doing something, the question is, should I go for a conventional path, or should I just go with my, inclinations, whatever I feel is coming natural to me? Okay. So I will not. I'll take them not necessarily in the sequence in which you ask the questions, but let's see. Rahul asked a question about self-doubt, right? How many of us have some amount of self-doubt? There's only one person who has no self-doubt, and he's the person who's just dead. जो मर चुका है उसका कोई self-doubt नहीं होता. Self-doubt कब होता है? When I am here and what I want to achieve is here, है ना? And I am striving to get there. If something is well within my reach, I have no self-doubt to bend down and picking up this bottle of water, because it's
asking of me much less than the capacity that I have. So self-doubt is not necessarily a bad thing. The question is, how badly do I want the goal that I'm aiming for? आपके जमाने का नहीं है, सुनील गावस्कर नाम सुना अभी भी है ना? सुनील गावस्कर had said many a time that he was just before any series against the West Indies, he always was a little bit more unsure of himself and had a great self-doubt and also was nervous. Then when people ask him, but your statistics say something else. Out of the 34 centuries that you have scored, 12 of them have come into the West Indies, which had people like Michael Holding, Joel Garner, Andy Roberts, Malcolm Marshall, But he said that being nervous, being doubtful about my capability made me that much more alert. I was that much more focused on the task. I was never overconfident. And 1 hour before my innings starts, if test match starts, I wouldn't talk to anybody. He would, when Sunil Gavaskar, जैसे innings खत्म होता है, ये कहते हैं, when he's walking back, until he goes out for his batting, nobody dares go and say anything to him. Not even dare say anything. सबका मालूम है कि यार सनी भाई के पास बात ही नहीं करना अगले 20 मिनट, चेंज ओवर टाइम में. टेस्ट मैच के शुरू में 8 बजे के बाद कोई बात नहीं करता था. कितना फोकस था आदमी. Self-doubt, you ask me, is a very, very important thing to nurture, to feel good about it. Just make sure that self-doubt should not begin to drive me. Nervous energy, अगर nervous anxiety और पूरा overwhelm करने लग जाए तो दिक्कत है. I am here, you might be thinking I am confident, or you saw Sunil there standing there, confident. Yes, confident of having done what you have done. But he set up a university. Hero Honda was not set up by him. It's the creation of his father, entire family. Now he set up a university. Why has he come here to talk to you? He could have sent a vice president marketing, no? He wants to listen to the customers. He wants to look at the pulse. Speaking for myself, I might have started on my second-hand scooter with 10 students, reached here, but if you ask me, Satya, are you confident of building a company that's in every district in India? Can it go into 10 countries? मैं कहूँगा, देखो, इच्छा तो है, कर पाऊँगा या नहीं तो वक्त ही बताएगा. I can't be more confident than that. It is true for every career. It's true when you go into IIMs, when you go before IAS. And my suggestion is, be aware of it. Nurture it. Deal with it proactively. Not deny it, because it's there in each one of us in the house. There's nothing wrong with it. रही बात कंपटीशन की, आंसर मेरे हिसाब से हाँ भी है और ना भी है. Because in a way competition also is a myth if you ask me. My competition is with the best capability that I have. Can I deliver my best when it is asked of me? To me that is competition. If I have given 110% of my capability in every situation, every moment in that path, है ना, अभी यहाँ सवाल पूछ रहे थे ना, नजदीक जाते जाते मैं अगर डर जाता हूँ, फिर लगता है कि भी आपने पूछा था सवाल, मैं सिर्फ यही सवाल, इसका जवाब यही दूंगा कंबाइन करके कि when I take the exam and I turn back and ask myself the question whether I made it or not, did I give 110%, 150% if there is something like that of my ability, of my commitment, of my discipline? Whether you pass or whether you fail, it will not make much difference to you. ये मुझे लगता है और मैंने हमेशा ऐसा ही देखा है. अगर मैं इतना ब्रिलियंट हूँ that I walk through corridors, there are people like that. There are people like that. You know, when I was at IIM Bangalore और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैसे पास होते हैं आपको मालूम है ना? कैसे? 10 ईयर पेपर
अभी भी वो ब्रांड चलता है कि शिवदास एंड सन्स, केनैक्स बोलते थे। कमला नगर चले जाओ, जनवरी फरवरी के महीने में जाके खरीद लो, उसको अच्छी तरह कर लिया, चले गए, अपग्रेड। आईआईएम गया था मैं, आईआईएम में जाके मैं ऐसे करता हूं, कोई चांस नहीं है। पहला मेरा मार्केटिंग वाले कोर्स में मेरा डी आ गया था। सबसे पहला कोर्स मार्केटिंग का कौन सा था? क्या क्या आ गया था? व्हाट इज द स्कोर? डी। डी माने इट्स कॉल्ड डेफिशिएंसी क्रेडिट पॉइंट्स। यू गेट 3 Ds, यू आर थ्रू आउट ऑफ आईआईएम। तो मैं अपना शिवदास का मैं किंग था, तो मैं बॉस के पास पहुंच गया, प्रोफेसर विजय सर के पास पहुंच गया। मैंने कहा सर आपने देखिए ये पेपर लास्ट ईयर दिया था, सेम पेपर इस साल दिया, ये टॉपर का आंसर, ये मेरा आंसर, लास्ट ईयर का टॉपर का आंसर, कैसे डी हो सकता है? उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। मेरे को उस टाइम तो बहुत गुस्सा आया था। उसने कहा बेटा मार्केटिंग में सवाल सेम रहते हैं। क्या बात है? तो क्या मिलना था मुझे? डी ही मिलना था। उन्होंने कहा, मैंने थोड़ी माना, बट उनका कहा चलता है, मेरा नहीं चलता है। So competition, brilliant people there, they've gone the path they went. Your question about beaten path and my own path, I finished my IIM degree 17th rank from the bottom. 180 जने थे बैच में, मेरा रैंक क्या था? 1। यार 17 बॉटम का नंबर बताओ, रैंक बताओ। 163। मुझे मालूम था कि भैया कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगा ना, यही रैंक रहने वाला है। उनके रेस में मैं नहीं दौड़ूंगा, मैं अपना रेस शुरू करूंगा, उसमें अव्वल नंबर अपना ही है कि नहीं? रैंडमैक्स में नौकरी करता था और जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो एफएमएस के 76 बैच के थे। डीएस ब्रार सीईओ, चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर परविंदर सिंह। इवन ब्रार के नाम बिकम परविंदर सिंह को चेयरमैन जब तक नहीं चेयरमैन रहेंगे, उनके बाद उनका बेटा चेयरमैन बनेगा। मैं कहा लाइफ में चेयरमैन बनेगा तो चांस ही नहीं है। कैसे बनोगे चेयरमैन में? 50 तक क्यों वेट करो? कल छापो प्रिंटर 12 जी, छाप के लेना, नाम करियर लॉन्चर, डेजिग्नेटेड चेयरमैन। Many a time we are finding the villain in our lives. I think it's too much wastage of time. If you think you are a protagonist, opt for the script. Get started. What are you waiting for? मतलब मेरे साथ ये बुरा हो जाएगा तो कौन विलन होगा? अबे बुरा हुआ ही नहीं है तो भी तो दूर रहे। So my suggestion to you and all, please understand, I am not exaggerating a thing. And this is what I keep telling people. I'm sure you guys look at me as somebody who's successful, and I feel extremely responsible about it. And successful बंदे को खाली ग्लास पार्ट ज्यादा दिखाना जरूरी है। अगर ये दिखाने लग जाए, मैं तो शुरू से इतने जलवे थे मेरे, अरे एक लड़की मुझ के नहीं देखी यार स्पेशल में, एक लड़की छोड़ो लड़के भी नहीं देखते थे। बिल्कुल नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, करियर की बात कर रहा हूं। अब रिकॉर्ड चेंज हो गया, अटके वहीं पड़े। So please, it is not, and you know, a very important thing is, this beautiful poem that you heard, your kids, little drops of water make a mighty ocean. But you must know, the drop has to be mine. If you put little drops of somebody's water, it becomes a mighty ocean for him. ये मेरे को बहुत क्लैरिटी थी। मैंने कहा जितना मर्जी दिक्कत हो, लेकिन करियर लॉन्चर तो मेरा ही होगा ना। मैं रैंडमैक्स के लिए फाइट मारता रहा हूं, जिस दिन उतार दिया, एंड दिस हैपेंस, सो आई एम नॉट वांटिंग टू फोकस ऑन मी। व्हाटएवर इज योर पाथ, डोंट वरी अबाउट कंपटीशन। आप जितने अच्छे हो ना, वो वक्त के साथ पता लगेगा। एक टेस्ट में फेल होना, पास होना, I understand that it looks like almost like a life-ending thing,
you must be able to look at it with a little bit of detachment and continue to focus on my purpose. What is it that I want to do in my life has to be the continuous thing. Even that, I am not insisting that you should know it very well when you are 21, 22, 24. Zaruri nahi hai कि you would know. It is a continuous journey. Continuously keep asking yourself, keep the dialogue on, whether it's an IAS or banking or SSC or MBA or anything. Something inside you is very wise. It is guiding you in some direction. Listen to it. Listen to it. If you ask me, that's the wisest thing that you have. Not me, not the 6 guys who spoke in the morning. We are all okay. We are all good. We can give you our experiences. But I can't say that I will tell you what will work for you. I can help you discover. Make sense? Yes or no? आगे चले? Okay. पहुंचते पहुंचते मैंने जवाब दे दिया ना? पहुंचते पहुंचते जवाब हो गया. 3-4 जवाब एक साथ दे दिए. Sorry? I'll finish these 3 questions. Supplementary question. Okay. So during your time, I'm not pointing on you. If the competition was easy comparatively right now. Saying that, I mean, when you launched Career Launcher, it was the only one institute during that time. Earlier, when you went into IIM, the difficulty level of question was very easy. Now the difficulty level of question is very tough. Everybody is doing what has been required. Earlier, syllogism is been asked in the question. Now you have taught us shortcut that syllogism is not an easy, so tell us what is your say in this field right now, the competition and earlier competition. अरे बैठो बोलो मतलब एकदम I don't know about competition or not, but I can tell you about myself. लाइफ में शायद एक मर्तबा अगर कैट में से क्रैक होता तो उसी साल हुआ. ठीक है. So the argument that you are holding, the view that you are holding, I'm not sure if it is of any use to you. It's a futile discussion. We live in a real world. We need to deal with it. मैं आपसे ये आर्ग्यू करूं कि नहीं, आप जो व्यू होल्ड करते हो वो मेरे हिसाब से गलत है. Even if you win that argument with you, it will not take you and me any forward. I'm not an argument. I just wanted to highlight what should we do. Focus. मतलब तुमको if I think to launch one institute, MBA institute, so it will be a very difficult task to. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मैं देखो मुझे डर लगता है ना करियर लॉन्चर को चलाने में. मेरे को रिलायंस से नहीं लगता है, मेरे को तुमसे लगता है. Please understand, what you are actually saying is factually incorrect. How many of you heard of brilliant tutorials, IMS, अग्रवाल क्लासेस? भाई ये अमिताभ बच्चन जब दिलीप कुमार फिर धर्मेंद्र इंटू वन थे और मैं फक्कड़ आदमी सेकेंड हैंड स्कूटर पे आके बोल रहा है मेरे यहाँ पढ़ लो, मेरे यहाँ पढ़ लो, मेरे यहाँ पढ़ लो. सारे देखा फिर ब्रिलियंस है तेरे अब छोड़ दो. Because you are tempting me to speak more about me. It doesn't help. मैं ये कह रहा हूँ कि if you want to do anything in your life, Sunil talked about what Sachin Bansal has done with Flipkart. Look at the valuation. Why could Reliance not do it? Why could Tata not do it? Why could Sunil Mittal not do it? 3 kids from IIT in 7 years have done it. मैं उल्टा कह रहा हूँ. Guys like me are wired in the 70s. You are wired in the 80s. तुम्हारा हार्डवेयर अलग है, तुम्हारा सोचने का ढंग अलग है. मेरे चक्कर में मत पड़ो, मैं एंशिएंट हूं. अगर करियर लॉन्चर को since you are talking whether it's career launcher or whether it is Munjars, whether it is anybody who's a 500 crore, 1000 crore, 1000 crore company,
उनका थ्रेट, उनको कभी थ्रेट पीएच से नहीं आता है। वो सब एक दिन से सोचते हैं, थ्रेट आता है नेक्स्ट जनरेशन में। माइक्रोसॉफ्ट डिड व्हाट आईबीएम कुड नॉट डू। Microsoft could not do Google. I keep saying this. Google could not do Facebook. Facebook could not do WhatsApp. WhatsApp cannot do what somebody else can do. उल्टा है, तो चेंज कर दोगे ठीक रहोगे। Stand apart. इसका क्वेश्चन था, you know how to you stand apart. Okay. You know, there is always this saying that whether it is Narayan Murthy, or whether it is Amitabh Bachchan, whether it is anybody, whether it is Sunil Munjal, everybody who is successful, no, they become superstars overnight after 20 years. Does that make sense? Yes, sir. Yeah? जब वो लगा हुआ था ना, दिन को रात किया हुआ था, रात को दिन किया हुआ था, उस टाइम कोई उसको मुड़कर देखता नहीं है। तो स्टैंडिंग अपार्ट जो है ना, वो अगले का नजरिया है। आपका नजरिया मेरे बारे में, ये हमारी नजरिया है। when we see शाहरुख खान, how he has changed the whole business model of actors revenue. उसने कहा कि ये थोड़ी तरीका है, इतना पैसा ले लो कि प्रोड्यूसर मर जाए। वो तो कहते हैं जब मेरे को कोई 70 mm स्क्रीन पे चढ़ाता है तो I should be grateful to him, but I will take risks along with you. He changed the model on its head. He says, give me what money you can give, but whatever we'll make, not together we'll fight. We'll make, we'll split. Then he went to Coca-Cola and said, मैं गाने में ना जब काजोल के साथ रहूंगा, ऐसा कोक पीऊंगा, तुमको पैसे दे दे। पहले क्यों नहीं कर सकते थे लोग? No, I think models are changing all the time. And when he would have suggested that for the first time, the director would have shot it down. He was standing apart in his thinking. One of the successors, he would have said that. Same is the case with many business models. People don't listen to it. But first couple of them, they persevere long enough, and when they become successful, then the world thinks a world about the person. Actually, तब ये देखना चाहिए, कहते हैं ना, आइसबर्ग का 9/10 जो है, it is under the water. Only 1/10 is visible. So when you see, when you meet a person, चांद से साथ जो दिख रहा है, 1/10 दिख रहा है, 9/10 जो है वो दिखता नहीं। Okay, so if you are that, and I am saying it in the context of many of you. You might be unsung, unheard of, not very beautiful or not most handsome 6-footer to look at, but don't worry. You have to peg away. You have to really keep pegging away. It will come. When it comes, nobody can stop you. दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है आपको। और तब आप देखोगे कि यार, I learned one secret. You know, we always, I remember reading this small booklet by Swami Vivekananda. What is it called? No, यार, छोटी सी किताब। Youth. I'll let you know. It's always like. So in that, he talks about saying that we've always waited in our life for that elusive help to come, which never arrived. The day I stopped looking for help and I began to only say, the only savior in the world for me is myself, that's when my life began to change. So true. So true. Do that. Keep pegging away. I don't think it will be any difficult. 12th fail किया था? तुम्ही करा हुआ था? यही था ना? एक शख्स है। तो सवाल क्या था? 12th के बाद तुम क्यों सक्सेसफुल हुए? देखो उस टाइम मैं तो दोनों क्रिकेट दोनों साथ ले लेता हूं मैं। उस टाइम मैं क्रिकेट में डूबा हुआ था। सवेरे क्रिकेट, रात में क्रिकेट। मम्मी बोलती थी कि कल रात को भी तूने इधर मेरे को मारा, ऐसे बॉलिंग कर रहा था सोते सोते ऐसे करके, है ना। तो अब टैलेंट कितना था ये तो मालूम नहीं, लेकिन जुनून पूरा सवाल था। सो आई माइट हैव स्पेंट फ्रॉम 84 to about 91 most of my time playing cricket.
मोस्ट ऑफ माई टाइम, मतलब घर से निकल जाते थे स्कूल से क्रिकेट स्टेडियम से रात को घर, और आके खाना खाए, फ्लैट, सवेरे उठे चले गए, ऐसे होता था। एंड आई डिड रीजनबली वेल इन जूनियर क्रिकेट, यू नो, आई somehow went to a camp done by Vishnu Singh Bedi. He called my father. We used to at the time live in Meerut, and he called my father and said कि इसको थोड़ा टैलेंट है, उसको दिल्ली ले आए। पापा ने कहा स्कूल एडमिशन, मैंने कहा मैं करा दूंगा। ऐसा करके मैं अंडर 15 खेला, फिर अंडर 17 खेला, थोड़ा बहुत खेलता रहा। 12th में ऐसा लग रहा था मुझे कि शायद एक एट दैट टाइम अंडर 17 में एक रूल था, यू कांट प्ले अंडर 17 if you go to college. And I had one more year of under 17. So if I were to go to college, I couldn't play next year. And in cricket, if you make good mark in junior cricket, your entry into Ranji Trophy becomes that much easier. तो मैंने पापा को जाके एक दिन बताया, मुझे पापा से कम डर लग रहा था, मम्मा से ज्यादा डर मुझे लगता था मेरे सबसे बड़े भाई से, जो कि यहाँ बैठे हैं। क्योंकि ये बोल देंगे ना, मामा को बोलते मम्मा आपको बेवकूफ बना रहा है करके, है ना। श्रीनी इज माई ब्रदर, ओके। सो कन्विंस करना पापा को सबसे आसान था, मम्मा मान गई, पापा को डांट पड़ी खूब कि तुम मान गए ऐसा करके। You know, the point that I'm actually making is, I could have given the class 12 exam that year, but I took a call. मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लगा, मुझे लगा कि यार मेरे को ऐसे वैसे नहीं करना, मेरे को क्रिकेट खेलना था इसमें, और इस साल नहीं खेल पाया, अगले साल कर लूंगा दोबारा, देखिए। And I think a lot of credit goes to my family, that my family is, you know, the only thing we could have done in our lives is by doing well in academics. No business, no nothing, father is a government servant. I keep meeting students, and this is where this is my ब्रह्मास्त्र मेरे पास है। मेरे पास बच्चे आते हैं, सर मेरे पास ड्रॉप ईयर है, कॉलेज के बाद मैंने एक साल नौकरी नहीं किया, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, अब IAS का कॉल आ गया, लोग बोलेंगे तूने एक साल ड्रॉप किया, उसके बाद IAS कर रहा था, IAS में तेरा हुआ नहीं, अब IIM आ गया, तू तो बड़ा बेकार आदमी है, अब मैं क्या कहूँ। जब मैं उनको कहता हूँ कि तुमको मालूम है मैं 12th क्लास 2 बार किया हूँ, कहता है तो मेरे से गैर गुजरा है, तो अपना लाइफ वहीं पर खत्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। Look at the Western world, ये हमारा दिमाग में है। Look at the Western developed countries, वो तो 1-2 साल की छुट्टी ले लेते हैं, कहते हैं I'm traveling the world। मतलब अंग्रेज कुछ बोले तो बड़ा फैशन, देसी बेचारा मजबूरी में करे तो वो नहीं, कहते हैं ना कि वो अमीर लड़की ऐसे फटी कपड़े पहन ले तो फैशन, गरीब पहन ले तो निर्मा बात, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि that was one of the events where I took responsibility of outcome of an event in my own hands. As a 17-year-old, I went and told my parents कि मैं ये कर रहा हूँ, and imagine how responsible I will have felt, or I will have felt at that time, the next year, because next 12 months I continued to play only cricket. फिर जनवरी 15 फिर आ गया, फिर सीजन खत्म। अब देखा यार पिछले 12 महीने में भी फिर कुछ नहीं पढ़ा, अब जाके क्या बोले मम्मी पापा को, मैंने कहा दुकान बंद करो, किताबें उठाओ, पढ़ो, और मुझे अच्छे कॉलेज में जाना था। I wanted to go to a good college. The school that I went to, I don't know if many people are aware, DAV जंगपुरा, सुना है? बिल्कुल बदमाशों का कॉलेज है, स्कूल, नॉट PGDA, स्कूल जंगपुरा में है। मेरे साथी लोग थे, बहुत एस्पिरेशन होता था कि कॉलेज चले जाएंगे, कौन सा कॉलेज नहीं, कॉलेज चले जाएंगे, बाकी ऑटो ड्राइवर ऐसे। तो उस टाइम मैंने कहा था कि नहीं, बिकॉज यू नो इवन माय गुरु पेशन बेदी यूज्ड टू ऑलवेज से प्लीज बैलेंस एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, कब स्पोर्ट्स हाथ दे जाए पता नहीं चलता। दैट वाज द सिचुएशन एट होम आल्सो, दे सेड यू प्ले बट डोंट नेग्लेक्ट स्टडीज। Fortunately, I could manage that, and it's easy to fight me. Did I answer the question? किसने बोला नो, उसने कहा हाँ बोल दे। तो देखो
कुछ नहीं, मैंने ला रहा हूँ स्ट्रैटेजी। लास्ट सवाल वही है, स्ट्रैटेजी एक ही है, लगे रहो, कुछ नहीं है स्ट्रैटेजी। देखो अभी तो मेरे से स्ट्रैटेजी इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि तुम सोच रहे हो मैं सक्सेसफुल हूँ। नहीं तो कौन पूछता है यार, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, मेहनत। And you know the last one or two things, and I will close, perhaps we may not have time to take many more questions. I said something in the early part of my presentation about there is something very wise in each one of us. I am a complete believer in that. Whether you are 14 or 19 or 29 or 79. विजडम है, एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है। मैं कहूंगा कि उसको सुनना, मैंने इसके बाद आपने बोला ना सीक्रेट्स का, वो मैंने जरूर सुना हमेशा। आई हैव ऑलवेज पेड अटेंशन टू व्हाट माय इंट्यूशन हैज सेड, व्हाट माय इनर वॉइस। सोनिया गांधी ने उसको बहुत बुरा नाम दे दिया है, इनर वॉइस करके उन्होंने सीट नहीं दिया करके कभी गाली देते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि माय इनर वॉइस वाज सेइंग, legally she could have become the prime minister, but she said my inner voice is saying. whether inner voice का नाम कमलनाथ है, नरसिम्हा राव है, मालूम नहीं है। but my humble submission and very persuasive suggestion to you is please listen to it, and जो आपके मेंटर होते हैं, जिनको आप रेस्पेक्ट करते हैं, पापा हो सकते हैं, एल्डर ब्रदर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, make sure that you have a conversation with the person on it. Okay, that is one. Having said that, you know what I want to do in my life normally is a $1 million question. Most of us are going through the run. कॉलेज हो गया, MBA कर लो, MBA हो गया, नौकरी कर लो, नौकरी हो गया, शादी कर लो, शादी हो गया, बच्चा कर लो। फिर सोचता है वो 35 के बाद मैं क्या कर रहा हूँ। I am not kidding. My batchmates, all top notch, which I mentioned to you a little while ago, they were in the top 5, top 10, top 15. 45 साल की उम्र में अब जाग रहे हैं, अब नौकरी छोड़ रहे हैं, and they also make a big deal out of it. 17 साल इन्फोसिस में काम किया, अब मैं प्रेसिडेंट ऑफ यूरोप हो गया, अब मैं नौकरी छोड़ दिया, और उसका पूरा एडवर्टाइजिंग करते हैं। और 1-to-1 बात करो, कहते हैं सोच रहा हूँ क्या करूँगा ये। Please understand. Having degrees, having jobs, having network could still may not lead to happiness. Joy leading to success, and you stay in joy. Success is an ingredient, is a byproduct. Success को chase करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा. Joy को chase करो. You know, Geet Sethi, 11-time world champion. क्रिकेट इतना बड़ा गेम है कि हमको सचिन का हर चीज 70 में दिखता है। बस 11 दफा वर्ल्ड चैंपियन बना है। उस टाइम तक कोई भी हिंदुस्तान में कोई गेम नहीं बनाता एक दफा भी। गीत सेठी का ऑटोबायोग्राफी पढ़िएगा, हिज एंटायर ऑटोबायोग्राफी इज अबाउट जॉय वर्सेस सक्सेस। सक्सेस को चेज न करो, वो अपने आप आपको, डायलॉग है ना 3 इडियट्स में, क्या है वो, कामयाबी झक मार के। यू नो, स्क्रिप्ट राइटिंग ऐसे नहीं बोला जाता है, उसमें पूरी कायनात बसी हुई है उसमें। आप जॉय, which means what is the operating definition of it? The operating definition of this joy is, answer is the question, what are you willing to do even if you are not paid for it? तुम बोलेगे मजाक कर रहा है। आगे जाके मैं दूसरी बात कहूंगा, what are you willing to do even if you are penalized for doing it? मैं आपको पनिश करूंगा, और ये तो बात अंदर से निकलेगी, ये किसी गाइड या पूंजी या टीचर से नहीं निकलेगा। बहुत मुश्किल लगता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इट इज अ जर्नी ऑफ डिस्कवरी। डोंट पनिश योरसेल्फ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे को संडे शाम तक आना चाहिए आंसर, नहीं आ पाएगा। महीने लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, और ये जो आप एग्जाम्स ले रहे हैं, मेरे हिसाब से these are all safety nets while you are pursuing that, है ना। आपने ग्रेजुएशन किया है, एक लेवल का सेफ्टी नेट है। The pursuit must be that when you are going to an IAS
और MBA, you are only upping the safety net. या थोड़ा ऊपर कर लो, ऊपर से गिरूंगा ना थोड़ा यहाँ पर है. It is just that it's a safety net. What will you do after becoming an IAS officer? Life still is on. After going to an IAS, life still is on. The question is on. And even there, the question will be asked, what kind of companies do you want to work in? You must continue to refer to the मैं क्या करना चाहता हूँ? ऐसा कौन सा जॉब है? क्योंकि आप IAS में चले जाएंगे या सिविल सर्विस में चले जाएंगे, लोग बोलेंगे कि IAS नंबर 1 है, IAS नंबर 1 है. आपका दिल कहता है कि मेरे को यार इस एरिया में काम करना है, लेकिन इसमें कभी पैसे नहीं है. अगर तुम बोले तो तुम कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बनोगे. अगर तुम्हें नौकरी ले लोगे तो US डॉलर्स में सैलरी मिलता है, ये वाला लोग तो इंडियन रुपीज में मिलता है. कहते चलो वो ले लेता हूं. So I think it is important to deal with it. It will take time, but until that time, we also live in a real world, and managing this duality, I think, is an important part. ऐसा कुछ नहीं है कि straight रास्ता है. Managing this duality is an important part of managing one's life and one's career, and I'm sure you will all do well. My email ID is satya@careerlauncher.com. You are welcome to send me a mail. I reply to all my mails myself. कुछ सवाल रह गए हो तो जरूर कर दीजिएगा. I'll be very happy to respond to all of those. ठीक है?